वेलकम एवरीवन टू दिस डे 46। हम बना रहे हैं CRM प्रोजेक्ट जहां पे हमने यूजर बना लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स बना लिए हैं, ऑथेंटिकेशन हो चुका है, ऑथराइजेशन हो चुका है। वी हैव आल्सो सीन दैट हाउ अ यूजर कैन रेज अ टिकट और इंजीनियर को कैसे असाइन होगा। द नेक्स्ट थिंग दैट वी वुड लाइक टू डू इज दैट ऐड कमेंट्स इन द टिकट, और इसके लिए हमने कमेंट मॉडल पिछले वीडियो में बना लिया है। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हो देन यू मीन टू गो बैक और उन सारे वीडियोस को देख के यू हैव टू अगेन कम बैक एंड वॉच दिस वीडियो। We'll start from where we stopped in the last video, and today we'll build the APIs around adding comment inside a ticket. Let's get started. On the screen पिछले वीडियो में हमने ये कमेंट मॉडल बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे API बनाना है ताकि I can go and add comments, और मुझे API बनाना है ताकि I can go and update comments. Also अगर मैं list of the comments को fetch करना चाहता हूँ then I should be able to go and do it. तो ये सारे APIs हम बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मॉडल बन चुका है। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? वी हैव टू गो एंड राइट द कंट्रोलर। तो मैं क्विकली जाऊंगा यहां से अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में। आई विल गो इनसाइड द कंट्रोलर्स, और यहां पे जाने के बाद लेट मी गो एंड क्रिएट अ फाइल कॉल्ड एज comment डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। ठीक है, मैं करता हूं comment डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। परफेक्टली फाइन। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं एंड लेट मी गो एंड क्लोज ऑल द अदर फाइल्स आल्सो फॉर नाउ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा सिंपल दिखाई दे। और यहाँ पे आने के बाद what I need to do is that first of all I would like to go and create the content. First of all, what I'd like to do, I'll try to go and do the create the content. So let me go and call it as controller to create. अब जो कमेंट है that is always for a ticket, right? कंट्रोलर जो है वो हमेशा जो टिकट बनाए, सॉरी कमेंट लिखेगा वो एक टिकट की लिखेगा। कमेंट हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, राइट? तो फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे दोस्त, अगर आप समझने की कोशिश करो तो इफ एनीबडी मेक्स अ कॉल्स टू समथिंग लाइक दिस स्लैश, लेट मी चेंज अनदर कलर, टिकट्स। टिकट्स के बाद यहाँ पे टिकट आईडी कुछ डालना होगा, XYZ 1 2 3 4 5 N। दिस इज द टिकट आईडी व्हिच विल कम इन बिटवीन, फॉलोड बाय यहाँ पे आएगा मेरा कमेंट्स, राइट? इफ यू सी अराउंड, कमेंट्स विल बी एडेड बाय अ यूजर, और मोस्टली वो इंजीनियर होगा या फिर कस्टमर होगा, and comment will always come inside the ticket. Ticket will always be a parent to a comment. Comment has no independent existence. तो ये जो कंट्रोलर में लिखूंगा, तो कोई भी कमेंट लिखने के पहले आई हैव टू फेच टू इंफॉर्मेशन की हु दैट यूजर वाज, तो हु वाज द कमेंटर। तो बेसिकली जो कमेंट करने के लिए एपीआई को कॉल कर रहा है दैट इज द यूजर हु इज ट्राइंग टू राइट द कमेंट, और वो कमेंट कौन से टिकट के अंदर जाएगा, दिस इज द आईडी व्हिच आई गेट फ्रॉम द पाथ पैरेंट, है ना सर? तो इन दोनों चीजों को यूज करके लेट्स ट्राई टू गो एंड क्रिएट दिस कंट्रोलर इटसेल्फ। सो आई गो एंड डिलीट दिस अप। What I do is that let me go and write here exports dot create comment equals to, and then I go and call it as request response followed by this arrow function, and इसको मैं कर देता हूँ दोस्त async। ठीक है, तो async request response, and this goes and creates the comment. So I go and say that const bring it here, const comment object is equals to, and I'm going to call it as content equals to request dot body dot content। ठीक है ना? तो रिक्वेस्ट बॉडी में कंटेंट होगा ही होगा। दूसरा टिकट आईडी क्या है भैया? टिकट आईडी, और लेट मी सी द टिकट आईडी मैं मैच कर रहा हूँ। लेट मी गो इनसाइड द मॉडल दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर द कमेंट्स। तो नीचे आके कमेंट मॉडल पे आ जाते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो एक तो कंटेंट है, दूसरा टिकट आईडी है जो हमने देख लिया, और तीसरा है कमेंटर आईडी। कमेंटर आईडी क्या होगा? तो ये हो जाएगा रिक्वेस्ट डॉट params dot ticket id, and then I have commenter id,
and that should be equals to request dot user id. ठीक है, तो ये मेरा कमेंट ऑब्जेक्ट हो गया, कंटेंट हो गया, इसमें टिकट आईडी हो गया और कमेंटर आईडी हो गया, ये तीनों चीजों मिला के हमारा ये कमेंट ऑब्जेक्ट बन गया. Once it is done, then I'll try to go and create this. ठीक है, और उसके लिए मुझे कमेंट ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो I'll go above and I say that const comment schema object equals to require, and then it goes inside the models slash comment dot model. ठीक है ना दोस्त, तो ये मेरा आ गया कमेंट मॉडल, और इस कमेंट को यूज करके मैं क्रिएट करने की कोशिश करूंगा. तो व्हाट आई विल डू इज नाउ आई विल गो एंड पुट इट एज ट्राई, एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ कैच एरर, and then I go and say that console.log some error happened while creating a comment. ठीक है ना, और वो error क्या है, I go and part it as error, and now once it is done, then I'll go and send the response. I will say response dot status, and I'll go and pass it as 500 as internal server error, and then I go and say that send, and I pass here message, and I go and pass it as message some internal server error. ठीक है, so this is a try catch, and then inside the try block, what I'll try to do is that I'll go and try to create a command. So I go and call it as const comment is equals to, and I will await, and then I'll comment object dot create, and then I will call it as comment object. चूंकि अवेट किया है तो मैंने आगे ऑलरेडी ससिंक यूज कर रखा था, तो ये साथ में काम करेंगे, there will be no issues there. And now since the comment is created, I'll go and return this return, and I'll go say that response dot status कौन सा 201 because it has been created, and then I'm going to call it send, and then I'm going to pass this comment message itself. ठीक है दोस्त, तो ये मेरा बन गया comment. I'm able to go and create a comment here. Fair enough. अब अगर ये comment बन चुका है, then I need to also do some kind of validation, ताकि जो ये content आ रहा है वो ensure हो कि content हो मेरे पास, ticket ID हो मेरे पास, commenter ID हो मेरे पास. तो मैं एक काम करता हूँ, middle में जाके एक validation of the the comment content also we go and write it, right? So what I do here now is that I'll go to my middleware, right? I'll go to my middleware, and let me go and define a file, and let me go and call it as verify comment request body.js, verify comment request body.js, right? तो यहाँ पे मैं एक मेथड लिखता हूँ const validate, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, const validate comment request body. ठीक है, const validate comment request body, and then I have something called as request response next, and let me go and call it as a sync, and then I come here. The first thing that I need to do is I need to validate the username. So validate if the ticket ID is valid. Valid is ticket ID is present. पहले तो ये देख लेते हैं, ठीक है? So I can say that if request dot params dot ticket ID is present. If it is not present, then I should go and say that response dot status,
I go and call it as 400, and then I go and call it as send, and I go and pass the message failed. Ticket ID is not present in the path param. ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा. That's point number 1. Next thing that we need to do is we have to go and check if it is a valid ticket. You know what we need to do? Need to check if it's a valid ticket. So for that I need to go and fetch the ticket records, and if it is present then it's perfectly fine. If not, then I go and say that boss, जो ticket ID आप pass कर रहे हो वो तो present ही नहीं है. But for doing that I'll have to go and bring the ticket यहाँ पे. तो I go and say that const ticket model is equals to require, and I go and pass dot dot slash model slash ticket dot model dot js. तो js लिखने की जरूरत है नहीं, और यहाँ से मैं दिखा देता हूँ टिकट को. तो I'll go and say that const ticket equals to await, and then I go and pass as ticket dot find one dot find one, and then I go and pass underscore id is equals to request dot params dot ticket id. ठीक है दोस्त, तो मैं जाके टिकट को ढूंढता हूँ यूजिंग दिस टिकट आईडी व्हिच हैज बीन पास्ड. अगर ये प्रेजेंट होगा, इफ टिकट इज नॉट प्रेजेंट, in that case I going to return response dot status 400, and then I go and send it, send message ticket passed failed, ticket ID passed is not valid. Perfectly fine. ठीक है, तो ये मेरा हो गया टिकट. And then I go and do the validation of the content. Validation of content, it should be present, it can't be empty. So I go and say that if request dot body dot content, and if it is there not present, then again what I do, I go and do the same thing. Copy this, paste it here. Failed यहाँ पे टिकट लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना the content passed is empty. Failed content of the comment can't be empty. ठीक है सर, तो ये हो गया मेरा मिडलवेयर, और अगर सब कुछ सही है तो फिर नेक्स्ट कर देता हूँ. राइट, I'll go and write next. तो ये मेरा मिडलवेयर बन गया. अब ये बन चुका है, तो दोस्त अब बनाना सिर्फ है मुझे राउट्स. अब चूंकि कमेंट इज इनसाइड द टिकट, I'll go and use the same route file. तो मैं राउट फाइल में आ जाता हूँ. Let me go and open my ticket routes.js. ठीक है ना, और यहाँ पे मुझे बनाना है, I have to go and find create a ticket. What I'll do now is I'll go and call it as route.post, and here I'll just first of all do this. I'll go and call it as ticket ID ताकि वो अच्छे से समझ में आए. Followed by and go and call it as comments. कमेंट करने के बाद मुझे मिडलवेयर तो डालना ही पड़ेगा. राइट, तो मिडलवेयर में डालूंगा एक तो वेरीफाई टोकन, और उसके बाद मुझे डालना पड़ेगा I'll have to even copy this, और मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे what कमेंट मिडलवेयर, और
JWT, I can go and make use of modular कौन सा मेरा यहाँ पे verify comment. Let me go and copy this, paste it here, which is my ticket routes. ये आगे मेरा कमेंट मिडलवेयर. अब कमेंट मिडलवेयर में मुझे एक्सपोर्ट किया है कि नहीं मैंने, तो इफ आई गो बैक, तो जैसे मेरा वेरीफाइड टिकट रिक्वेस्ट है वैसे मैं वेराई कमेंट, अब यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं करा है, राइट. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ता है, राइट. फिर कॉपी दिस, यहाँ पे सेम टेम्पलेट, आई जस्ट मेक यूज ऑफ दिस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैलिडेट कंपनी रिक्वेस्ट बॉडी. लेट मी कॉपी दिस, कमेंट रिक्वेस्ट बॉडी, और यहाँ पे मैं यही डाल देता हूँ remove comma, remove this, and this is how it will be exported. और अब जाके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ and I can go to my routes which is ticket routes, और यहाँ पे comment I will call it as comment mw dot validate request body, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब मुझे कमेंट कंट्रोलर को यहाँ पे लेके आना होगा, राइट. तो जस्ट लाइक दिस, लेट मी कॉपी दिस, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको, और टिकट के बदले में हम यहाँ पे चेंज क्या कर देंगे, विल गो एंड मेक इट एज कमेंट कंट्रोलर कमेंट, एंड इंस्टेड ऑफ टिकट इट बिकम्स कमेंट. अज्यूमिंग कोई भी टाइप मैंने अभी तक नहीं करा है, एंड होपिंग दैट दिस वर्क्स. यहाँ पे मैं आ गया कमेंट कंट्रोलर, और फिर मैंने यहाँ पे उसके अंदर मेथड किया क्रिएट कमेंट. परफेक्टली फाइन. तो सारा कोड लिख चुका है. अब एक बार सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं node index.js. परफेक्टली फाइन, सर्वर तो चालू हो गया, आधा काम हो चुका है. सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू टू टेस्ट दिस फ्लो. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई विल फर्स्ट लॉग इन. ठीक है, लॉग इन करने के बाद what I'll do is that I can go and create a ticket, and after creation of the ticket I can go and write a comment on the ticket, right. These are the 3 steps that I can go and do. ओपन कर लेते हैं just to test this out if it works. तो मैं गया यहाँ पे ये postman, और यहाँ पे what I do now is, let's first of all do a login, right. So I have to log in, sign in. So I'm signing with the user 1 welcome 1. Let me go and click on the send. तो ये बन गया, ये मेरा आ गया एक्सेस टोकन. अब इस एक्सेस टोकन को यूज करके आई विल ट्राई टू गो एंड क्रिएट अ टिकट, राइट. सो इफ आई गो एंड सी हियर, दिस इज द टिकट बॉडी. I don't have one. Okay, I just use this. So I'll go and put to the headers, add this access token. In the body I go and say that I will remove all of this, right, and I go and say title, and I go and say that my app is not working, everything is messy, not able to work out. Perfectly fine. Let's go and click on the send. Now it is saying bad request. What is the bad request? Now I'm saying put, it has to be post, और मुझे हटाना पड़ेगा. And you click on the send and it said 201 created. So the ticket got created with the priority 4 itself. अब इस टिकट में मैं एक comment, I want to go and add a comment, right. So for this what I'll have to do is that this has an ID. तो मैं एक और इसको, what I'll do is that I'll go and duplicate this tab, and here I have this ticket ID right here, slash comments, and in the body what I do is that I go and provide that comment.
in the body I'm going to provide this content and content should be say for example content ही था ना अगर मैं अपना कोड खोल के देखूं तो जो कंट्रोलर है कहाँ गया मेरा कंट्रोलर comment controller is expecting the content perfectly fine so you can pass content hey where what is the status of my ticket okay now if I go and click on this send it's saying 401 authorized why I think maybe the ticket would have got expired so what I'll do now is I'll again re-log in and when I log in karunga I'll have this access token and I go back and let me go and put the headers you go and click on the send or you get a 201 created and what is the content this is the content that shows up and this content this is the ticket id this is the commenter id and this is the id this is created blah 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 right? I'm going to create another content let's say for example second content where is the status of my ticket I am still not updated so for a given ticket I can go and keep on adding more tickets but in the case let's say that if I go and miss it and I hit on the send it will not go and find it right if I go and write it like this then again it will not go and find it fair enough so I'm able to go and create the comments right if I again go into this is my third comment this is my third comment if I go and click on the send sorry I have to go and click on the send and then I'm able to go and create the content can you see here तो अभी हम क्या कर रहे हैं सर I have been able to create multiple comments to the same ticket now the next use case is that boss I want to go and find all the list of the comments under a given ticket itself so for example अगर मैं इसको duplicate कर दूं let's say that I want to go and duplicate this और मैं चाहता हूं कि इस टिकट के अंदर जितने भी कमेंट्स हैं आई वुड गो एंड फेच इट तो मुझे क्या करना मुझे गेट कॉल करना होगा देन आई शुड गो एंड गेट इट बट राइट नाउ 404 बिकॉज दिस यूआरएल इज नॉट डिफाइंड सो आई हैव टू गो एंड डिफाइन दैट क्विकली इसको भी कर लेते हैं तो लेट मी गो टू माय कोड और यहाँ पे मैं आता हूँ कमेंट कंट्रोलर के पास राइट व्हाट आई विल डू आई विल गो एंड कम हियर एज कमेंट कंट्रोलर और यहाँ पे मैं करूंगा गेट द कमेंट्स व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल गो एंड कॉल इट एज गेट द कमेंट so I'll come down and once that get the comments for the given ticket. I'm going to call it as exports dot fetch comments is equals to a sync and then I'm going to call it as request response. Okay. What I'll need to do now is that I'll have to go and find the ticket ID. So I want to say that const. You put under the try catch block. Const comments. इसको मैं minimize कर लेता हूँ. Const comment. थोड़ा font size बढ़ा देते हैं. Let me bring it down. Const comments is equals to comment वाला जो मॉडल है जो मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ comment dot find और यहाँ पे मैं डालता हूँ ticket id is equals to request dot parent dot ticket id ठीक है दोस्त और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा await ताकि वो वहाँ पे वेट करे और then I'll go and return the status which is response dot status 200 into send and then I go and pass comments perfectly fine and then inside try I go and put it as catch error and then I go and set the response dot status and I'm going to pass 500 and going to and here I go and send it send message some internal server error ठीक है भाई perfectly fine
यहाँ पे मैं लॉग भी कर लेता हूँ कंसोल में, console.log some internal error happened. While लिख देता हूँ, while fetching the comments, और वो क्या है, that error is err. Perfectly fine. तो ये हमने fetch comments वाला मेथड लिख लिया. अब कंट्रोलर हो गया है, तो अगला क्या होगा, मुझे राउट्स लिखना होगा. राउट में क्विकली चला जाता हूँ. टिकट राउट, लेट मी गो एंड कॉपी दिस और इसको पूरा पूरा यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं दोस्त. इट शुड बी गेट कॉल एंड इट शुड बी वेरीफाई टोकन, तो करना ही पड़ेगा. रिक्वेस्ट बॉडी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. और देन आई वन से दैट डॉट फेच कमेंट्स. एक और चीज, इफ आई गो बैक, दैट्स ओके, दिस इज व्हाट आई गो एंड डू दिस फेच कमेंट्स. मैं एक और कर सकता हूँ कि जो टिकट आईडी है वो पास हुआ है सही कि नहीं, उसके लिए एक वैलिडेशन में ऐड कर सकता हूँ, राइट. तो व्हाट आई कैन डू इज दैट आई कैन गो टू माय मिडलवेयर and in this middleware let me go and copy this और इसके नीचे डालता हूँ और मुझे लगता है validate ticket ID, ठीक है. टिकट आईडी तो प्रेजेंट होना ही चाहिए. और उसके बाद वाली चीज नेक्स्ट आती है, अगर ये प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं तो and I don't have to validate the content here and I go and do the next. We copy this validate ticket ID और मैं इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ दोस्त, ठीक है. I'll come back to my ticket route और यहाँ पे कमेंट M2 के बाद validate ticket ID, ठीक है दोस्त. Let me save this और मैं सर्वर को एक बार फिर से चालू करता हूँ. कंट्रोल C node index.js. Let me go back here postman. मैं फिर से मुझे यहाँ पे लॉग इन करना होगा. I go and click on the login, send. This is my access token. और अब मैं लास्ट फेच में करूँ. If I go to my headers and click on this and hit send, then I'm saying 200 okay, and then I'm getting two comments that I have done. Hey, what is the status of my ticket? This is the first comment. Then, hey, what is the status of my ticket? I'm still not updated. This is the second comment. And then I'm saying that, hey, this is my third comment. So now for each ticket, I'm also able to go and update the comment. So these are all the routes that I'm able to go and define well. Perfect. So with this, हम इस वीडियो के अंत में आ चुके हैं और मोस्ट सारे जो फीचर्स थे कि इस CRM एप्लीकेशन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स, टिकट क्रिएशन, टिकट को अपडेट करना, टिकट को सर्च करना, टिकट को असाइन करना और टिकट पे कमेंट करना, वी हैव डन. नाउ वी हैव कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन. व्हाट वी वांट सर फ्रॉम हियर ऑन इज दैट कि जब भी कोई भी टिकट, राइट, व्हेनेवर देयर इज एनी टिकट is either created or a ticket is updated, मैं चाहता हूं कि there is one notification service, there is one notification service जिसको कि हम through some kind of messaging system, through some kind of messaging system, say for example Redis, हम इसको मैसेज भेजें और ये नोटिफिकेशन सर्विस would keep on reading for the message, reading for the message,
और ये पढ़ के इट शुड बी एबल टू सेंड द नोटिफिकेशन, सेंड द नोटिफिकेशन बाय ईमेल। तो हमको एक और माइक्रो सर्विस बनाना पड़ेगा, नोटिफिकेशन सर्विस, जिसके पास ये कैपेबिलिटी हो दैट इट इज एबल टू ऑब्जर्व फॉर एनी काइंड ऑफ मैसेज विच इज कमिंग ऑन द रेडिट सर्वर, उसको रीड करे और सेंड कर दे मैसेज। और जब वो ईमेल सेंड कर दे देन इट शुड समहाउ गो एंड अपडेट दैट भैया ईमेल सेंड हो गया है। ठीक है, सो दिस नोटिफिकेशन सर्विस should be able to push that data to this ticket service so the ticket service can understand that boss okay the mail was sent. Am I clear? Does it make sense? तो मुझे यहाँ पे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सेट करना होगा, और ये कम्युनिकेशन सेट करने के लिए जो मैं चीजें यूज कर रहा हूँ वो एक मैसेजिंग सिस्टम की बातें कर रहा हूँ। तो अगले वीडियो में हम थोड़ा रेडिस के बारे में जानेंगे, फिर हम ये नोटिफिकेशन सर्विस को बनाएंगे एंड देन आई विल ट्राई टू इंटीग्रेट बोथ ऑफ देम। इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। सो आप बने रहिए, बताइए मुझे कमेंट में कि प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पे चीजें थोड़ी और एक्साइटिंग हो जाएगी। आई विल सी यू नेक्स्ट। थैंक यू।